As a traveler, I think you're always a little bit of a traitor. You leave home each time, looking for pastures a little bit greener, waters a little bit bluer, an existence perhaps a little bit truer. You live the dream for a while before you get back to reality and forget the dream. I didn't. 6 years ago, I came to the Andaman Islands. I found myself here, in these forests, beneath these waters, amongst these people. I lost my way back home. Come, let's explore these islands. My home, away from home. We woke up this morning just before sunrise and hit the beach. It was empty and vast and dark. And I love how, even in the drama of all those colors happening, beautiful is not the first word that comes to mind, even though it certainly is. The first experience that you feel is that of peace. And that is so rare in this crowded and busy and super fast world. We checked into our resort. It's just 5 minutes across from the beach, and it's run by a really sweet Bengali family who have just gone out of their way to make us feel at home and comfortable. मेरा नाम विद्युत बनीक है. मैं लिटिल अंडमान नेताजी नगर 8 किलोमीटर में रहता हूँ और मेरा छोटा सा एक रिसोर्ट है, उसका नाम हावा बीच रिसोर्ट है. लिटिल अंडमान में टूरिज्म का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो टूरिस्ट बहुत कम आते हैं. हमको 2-3 महीने ही काम मिलता है, उसके बाद काम नहीं है. तो 2-3 महीना आराम से गुजर जाता है, बाकी महीना सो के जाना पड़ता है, काम नहीं है कुछ नहीं. सबसे अच्छा है कि भीड़ भाड़ कम है और यहाँ जो भी लोग हैं सब फ्रेंडली है. इसके लिए सबसे अच्छा है कि सब एक दूसरे को मदद करते हैं हर टाइम. कोई अगर कोई मुसीबत में है तो सब आगे आके मदद करते हैं, ये सबसे बड़ा अच्छा लगता है. अगर लिटिल अंडमान कोई घूमने के लिए आया है तो उसको सबसे पहले काला पत्थर है, बटलर में बीच है, फिर हमारा बड़ा वाटरफॉल्स है और ये हरमंदिर में बीच भी अच्छा है, छोटा एक वाटरफॉल्स है वो भी अच्छा है. लिटिल अंडमान अच्छा जगह है और चारों तरफ आपको बीच ही मिलेगा, सबसे बड़ा बड़ा बीच है. Okay, so guys, what this is king coconut, yeah, na? Oh my god, this is so sweet. It is too sweet. I've never had coconut water like this. Delicious. लिटिल में सर्फिंग तब से शुरू हुआ जब फॉरेनर आना शुरू हुआ है. जब फॉरेनर सर्फ बोर्ड लेके आते थे, या तो पहले सर्फ बोर्ड नहीं थे, तो उस टाइम से शुरू हुआ है. और मेरा पास अभी बोर्ड जितना भी है वो मैंने एक दोस्त से मंगाया है. एक दोस्त है मेरा, तो दोनों मिलके हम लोग एक सर्फ बोर्ड का बिजनेस कर रहे हैं. हाँ, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है. बहुत हार्ड वर्क है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट का चीज़ है. मतलब वो उतना इजी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं कि सर्फिंग एकदम इजी है. बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत तकलीफ का काम है, बहुत हार्ड वर्क है. ज़रूर आप आइए. लिटिल अंडमान बहुत ही सुंदर जगह है. आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि लिटिल अंडमान क्या है. जब तक आप नहीं देखेंगे लिटिल अंडमान, लिटिल सोच के नहीं सोचना है, छोटा वो सोच के नहीं सोचना है. लिटिल अंडमान बहुत बड़ा है. तो आप आइए, आने से पता चलेगा लिटिल अंडमान कितना सुंदर जगह है और आपको आना भी चाहिए, हमको लगता है. When you find these powerful places, I think they call you, and my advice is always listen to that call. It doesn't come with a reason. It just says stop, but the reason will always follow, and I think the reason is always purpose. We don't find our own purpose; it finds us, and that's how I first came to these islands. We've come to Kaala Patthar Beach and its secret lagoon. You can see why it's called Kaala Patthar. Every island almost in the Andamans has one spot called Kaala Patthar, and that's because these are volcanic islands and these are volcanic rocks. But I have to say, none of the ones I've been to are as dramatic as this one. I mean, you have this backdrop of these gorgeous rocks and then the lagoon.
but never before had I been to Little Andamans. And what I saw that it was a big island with an even bigger heart. The people here are absolutely wonderful. I mean, the auntie at the resort fed us like we were her kids coming back from boarding school after a long term. And apart from that, the island itself, I think it's so much more dramatic than some of the other islands I've been to. I mean, these vast beaches all around the island, white sand, really blue seas, and the forests are so dense. Honestly, walking through these forests is quite, Jurassic Park-like, like these massive, massive forests. And when we went to the waterfall, I mean, we hiked through this and then ended up at this like jade lagoon. And Kaala Patthar was absolutely stunning. I mean, again, this gorgeous lagoon where you felt so perfectly safe to swim and snorkel and all of that. It's really been a magical, magical trip. I think I'm going to come back every year.